So we will start with the second chapter in differential equation, that is unit 2. In the first chapter, we have seen the equation of either of the following form, that is either it is in this form, that is dy by dx is equal to f of xy, or m dx plus n dy equal to 0. These two forms are known as differential equation of first order and first degree. But when we see the differential equation of first order and degree higher than 1, when I have this kind of equation, that means I want power, that is dy by dx raised to n of this form. इतना क्यों चिल्ला रहे हो? Okay, so your differential equation must contain dy by dx raised to some power, not 1. Raised to 2 हो सकता है, raised to 3 हो सकता है. So then we called it as degree higher than 1. So first order, that means your highest order derivative will be first order derivative dy by dx. There should be no term of higher order, that is d2y by dx square नहीं होना चाहिए. This is not going to happen. We want the term in terms of dy by dx raised to n. And in general, we call this dy by dx by p. So we denote it by p. So the equation कुछ भी हो सकता है. For example, p raised to n minus 2p x plus 1. So this is the differential equation of first order and degree higher than 1, where p is equal to dy by dx. So ये simplicity के लिए हम लोग use करते हैं p is equal to dy by dx. So whenever differential equation is containing small p, you will assume it that small p value is derivative of y with respect to x. Okay, so this notation we will use throughout this chapter. Throughout this chapter number 11, we will use p is equal to dy by dx. Okay, is this clear? Yes, sir. Okay, so let's move forward. So then solvable for p, that is method of factors, solve for y, solve for x, Clairaut's form, and then method of substitution. Means after the substitution, we will convert the equation into Clairaut's form. Okay, so this is a simplest one but lengthy one chapter for differential equation. So p is equal to dy by dx, and the equation is in the form of f of x comma y comma p is equal to 0. Now the equation, if it is algebraic, you can write the equation in the degree n, that is pn p raised to n, p1 p raised to n minus 1, p2 p raised to n minus 2, pn is equal to 0. So what is this p, p2 pn? P1, P2, Pn are the, that is P1 of x comma y, that is function of x comma y. Then we call this as a algebraic equation. We have already studied this algebraic and transcendental equation in terms of one variable in numerical and statistical method. NSM में हमने पढ़ा था what is algebraic equation and what is transcendental equation. Okay, so if you have a polynomial in P, what is P? P is nothing but dy by dx. Then your equation is this form. For example, एक example देते हैं. Consider this dy by dx cube minus sin x dy by dx square plus, sorry, plus
dy by dx minus y equal to 0. So you can write this equation as p cube minus sin x into p square plus dy by dx is p minus y equal to 0. So this equation in the algebraic form, that is the polynomial. Okay. So we will not use this kind of notation. So ये जो first वाला notation है correct notation है, but we will use only in the second form. Throughout this chapter we will use the second form, that is in terms of p. So ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि p square is not d square y by dx square. What is this d square y by dx square? What is the difference between d square y by dx square and dy by dx square? सर ये सेकेंड ऑर्डर है फर्स्ट वाला और ये सेकेंड डिग्री है. अच्छा. So let me give you the example. When I write d square by dx square, sorry, d square y by dx square, let's say y is equal to sin x. Okay. So when I write d square y by dx square, that is the derivative of first order derivative. So tell me, what is the derivative of sin x? माइनस Sin x का derivative होता है cos x. And when I differentiate again cos x, I will get minus sin x. Okay. Now let us see what is dy by dx, the bracket square. So dy by dx, the bracket square, क्या होगा? dy by dx sin x square. So it is a sin x, the bracket square. Sorry. Derivative of sin x is nothing but cos x bracket square. So it is cos square x. So d square y by dx square क्या मिला आपको? Minus sin x, and dy by dx square क्या मिला? Cos x. So in general, this is the second order derivative, whereas this is the first order derivative, but degree 2. Okay. So that is the difference between d square y by dx square and dy by dx. So we will study these three methods first, that is solvable for p, solvable for y, and then solvable for x. तीनों मेथड पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? क्लियर आउट फॉर्म देखेंगे, and the equation which can be converted into Clairaut's form after some substitution. So that is called as a method of substitution. Okay. So पहला method क्या है? Solvable for p. It is the simplest one. Okay. So let me say, if your equation is in the polynomial in p, that is equation of this form, p raised to n plus p1, p raised to n minus 1, p2, p raised to n minus 2, and so on, which can be factorized. Factorization का मतलब पता है आपको? For example, if I have x square plus 2x plus 1, I can factorize this as x plus 1 into x plus 1. So this is called as a factorization. So if I can factorize this original polynomial equation into the factors, that is p minus f1 xy, p minus f2 xy, and the product up to p minus fn xy is equal to 0. All are the linear factors. All these are the linear factors. Then what will happen? I will solve them individually. मतलब पहले को मैं सॉल्व करूंगा तो p माइनस एफ वन एक्स वाई मतलब क्या है? dy by dx is equal to f1 xy, which is the first order differential equation. First order differential equation का हमने बहुत सारा मेथड देखा. In general, we have studied 8 different methods to solve this first order differential equation.
तो उसका हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे एंड दैट सोल्यूशन विल बी 5(1)(x)(y)(c). दैट इज द फर्स्ट फैक्टर का हमने जो सोल्यूशन निकाला। सिमिलरली सेकेंड फैक्टर को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, थर्ड फैक्टर को, फोर्थ फैक्टर को एंड द लास्ट फैक्टर को वी विल सॉल्व एंड वी गॉट द n डिफरेंट सोल्यूशन 5(1), 5(2) अप टू 5n। तो n सोल्यूशन का अगर हम प्रोडक्ट लेंगे then that product will be the solution of this product. Okay, so understood this concept कि पहले हमने क्या किया, जो भी इक्वेशन दिया उसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद हर एक फैक्टर का इंडिविजुअली सॉल्यूशन निकाला। और ये क्यों कर सकते हैं हम इंडिविजुअल सॉल्यूशन, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी स्टडी हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो जब भी ऐसे फैक्टराइजेशन पॉसिबल है वी विल गो फॉर दिस मेथड। whenever this factorization is possible we will go for this method that is solvable for p. Okay, so let us see the example so that this concept will become clear. So ये जो सब solution है उनका product लेके हमको final solution मिलेगा. So that is over here. General solution of D in equation 1 is given by the product of these solutions, that is 5(1), 5(2) up to 5n equal to 0. So let us solve this equation. P square plus p e raised to x plus e raised to minus x, that is bracket close, plus 1 equal to 0. Can you factorize it? Can I factorize it? कैसे फैक्टराइज करेंगे? p square plus p e raised to x plus p e raised to minus x plus 1 equal to 0. फर्स्ट ब्रैकेट में से p कॉमन निकालो. What is the second bracket? P. हाँ ये p प्लस Plus 2x. हाँ अभी सेकंड में तो कम Plus 1 करेंगे ना. I want first term should be p. So e raised to minus x I will take common. So first term will be p plus 1 upon e raised to minus x equal to 0. But what is 1 upon e raised to minus x? It is p plus e raised to x because minus power in numerator will become the positive power. यहाँ पे minus x as it is, ये term as it is equal to 0. So first term हमने क्या निकाला, ये common है, ये common है. So what I will get, p plus e raised to x into p plus e raised to minus x equal to 0. So I got the factors. What are the factors? P plus e raised to x is the first factor and p plus e raised to minus x is the second factor. Now solve them individually. How to solve them individually? P plus e raised to x is equal to 0. पहला factor लिया. Then what is p? dy by dx plus e raised to x equal to 0. It is variable separable form. So I will write dy by dx is equal to e raised to x, sorry, minus e raised to x. I shifted that in this side. So what is dy? dy क्या होगा? Minus e raised to x dx. तो x के साथ x का टर्म है, y के साथ y का टर्म है. So integrate both the side. What you will get? Y is equal to minus e raised to x plus c. That is y plus e raised to x minus c equal to 0. So first का solution मिल गया. What about the second solution? Can you take the second solution? p minus p plus e raised to minus x. इसका solution क्या होगा?
इक्वल टू 0. ओके, p के जगह पे dy by dx इक्वल टू minus e raised to minus x, then dy is equal to minus e raised to minus x dx. Again it is variable separable form. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे तो y इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस बाहर e raised to minus x dx. Tell me what is the integration of e raised to minus x? e raised to minus x upon minus 1. So it is e raised to minus x upon minus 1. So this minus 1 will get cancelled, plus c. So you will write here y equal to e raised to minus x plus c. So what is the final value? Y minus e raised to minus x minus c इक्वल टू 0. सो ये फर्स्ट सोल्यूशन है, ये सेकेंड फैक्टर का सोल्यूशन है. सो जनरल सोल्यूशन क्या होगा? व्हाट विल बी द जनरल सोल्यूशन? प्रोडक्ट ऑफ दिस टू सोल्यूशन, दैट इज y minus e raised to minus x minus c into y plus e raised to x minus c equal to 0. The product of these two solutions will be giving you the solution of this original differential equation. Understood? Yes or no? Okay. Yes. So let's move on to the next problem. So we got these two factors, either p plus ex is equal to 0 or p plus e raised to minus x equal to 0. We have solved them separately. फर्स्ट का सॉल्यूशन मिला ये वाला, सेकंड का सॉल्यूशन मिला ये वाला, और फिर जनरल सॉल्यूशन इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू सॉल्यूशन. ओके, सो दिस इज द मेथड ऑफ पी. मेथड ऑफ पी में क्या करना है? फैक्टर्स को सेपरेटली सॉल्व करना है और आपको सॉल्यूशन निकालना. सिमिलरली ये करो, p square p times x plus y plus xy equal to 0. So we will separate out this term, p square plus px plus py plus xy equal to 0. फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या किया? फर्स्ट टर्म में से इन दोनों में से p कॉमन निकाला, वी गॉट p plus x. इन दो टर्म में से y कॉमन निकाला, अगेन वी गॉट p plus x. So the factorization is p plus x equal to 0, p plus y equal to 0. तो ये factorization मिल गया. अभी now solution बताओ मुझे. What is the solution of first term? p plus equal to 0. Okay, so what is p? dy by dx plus x. Okay, so what is dy? dy by dx equal to minus x. So dy by dy dx is is equal equal to to minus Integrating. x. Integrate Yeah, करो. minus into dx. dx. ठीक है, integrate both the sides. I will integrate here, I will integrate here. Side is y equal to, what is integration of x? 1. x square upon 2. 3 x square upon, yeah. I'm sorry. Okay. Plus c. So it is what? y minus x, sorry माइनस का प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस c इक्वल टू 0. सो ये फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया. व्हाट अबाउट द सेकंड वन? प्लस y इक्वल टू 0. यस, dy by dx हाँ, plus y equal to 0. प्लस y इक्वल टू 0. सो dy
by dx dy is equal equal, to minus y. take here, what you will get, dy dy upon equal y to equal to minus माइनस dx. dx. अभी इंटीग्रेट करो दोनों साइड. What is integrating? You will get log of y equal to minus, what is integration of dx? Integration of dx is x plus c. So अभी क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे तो what is here, x plus log y minus c equal to 0. So this is the equation of the second factor. So first को solve, second को solve किया separately. Then what is the product of these two? You have to just write the product, that is y plus x square by 2 minus c into x plus log y minus c equal to 0. This is your general solution. So general solution is the product of the factors. Okay, understood this process, method of P? Yes, sir. Okay, Yes, sir. so let's move on to the further. ये separately solve किया, ये separately solve किया, and then product लिया. That is it. What about this? xy p square plus x square plus y square into p plus xy equal to 0. Again factorization. See the factorization. What I have to expand the second term, that is x square p plus y square p plus xy. फर्स्ट टर्म में से मैंने xp कॉमन निकाला, देन व्हाट आई विल गेट yp plus x. सिमिलरली सेकंड में जब y कॉमन निकाला तो आई विल गेट yp plus x. So what is the factorization? Yp plus x into xp plus y. Okay, equal to 0. Now solve this equation. Yp plus x is equal to 0 और xp plus y equal to 0. कोई भी एक इक्वेशन सॉल्व करो. How you will solve? Yp plus x equal to 0. कैसे सॉल्व करोगे? Yes, tell me. Y dy by dx is equal to minus x. So dy by dx is equal to minus x by y. Yes, tell me. Take it here. Y dy equal to minus x dx. Integrate both the sides. Tell me what is integration of y dy? Y square upon 2. Y square upon 2. So it is y square by 2 is equal to minus of x square by 2 plus c. Similarly solve the second. And जो भी आएगा उनका product लेके you have to write the general solution. Okay. So general solution is nothing but the product of these two equations. इन दो इक्वेशन को इंडिविजुअली सॉल्व करना है. तो यहाँ पे मैंने किया yp, दोनों तरफ से वही किया है, x dx प्लस y इज इक्वल टू 0. फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, y dy इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स. सॉल्व किया y स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c. सो 2 को कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई एवरी टर्म इन द 2 एंड देन टेक इट हियर. सो यू विल फाइनली गेट y square plus x square minus 2 times c is equal to 0. सिमिलरली यहाँ पे dy by y आएगा, ये थोड़ा उल्टा है ना, xp minus y. तो dy by y आएगा, यहाँ पे minus dx by x आएगा. सॉल्व करने के बाद log y is equal to minus log x plus c. So it is
log y plus log x minus c is equal to 0. But log y plus log x क्या होता है? log x y. So log xy minus c is equal to 0. In fact, you can also combine this. Instead of c यहाँ पे log c लिया तो भी चलेगा. ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक ही फॉर्म में आपका इक्वेशन मिलेगा. So instead of this c, every term in the here is in terms of log, so I can also take c के जगह पे log c. चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. So general solution is the product of these two solution, that is first solution, second solution, and you got the answer. ठीक है. So this is the very simple method, that is solve for p. Okay, understood this method, solve for p? Yes, sir. Okay. हाँ बोलो. सर एमसीक्यूज पैटर्न में हम लोग का एग्जाम होगा ना? Yes. तो सर कौन कौन से टॉपिक मेन आएंगे, कुछ आप इम्पोर्टेंट दे दीजिए ना, उसमें हम लोग वो पढ़ के आएंगे. आप बोला ना 3 यूनिट 3 एंड यूनिट 4 ऑल द टॉपिक्स. यूनिट 3 लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, यूनिट 4 इंटीग्रेशन. सर तो इसमें आप जैसे मतलब क्वेश्चन होता है वो सॉल्विंग करने का टाइम उतना रहता नहीं, तो फॉर्मूलाज वगैरह पूछेंगे ना? हाँ, शॉर्ट आंसर्स पूछेंगे. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 4t? यू हैव टू अप्लाई. cos 4t का फॉर्मूला क्या है? S upon x square plus 16. ओके, तो अभी आपको cos 4t का पता है. सो व्हाट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to 2t into cos 4t? इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज करेंगे सर. हाँ, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलता है? s is replaced by s minus 2. या S. So I have calculated this, then I can calculate this by the formula. So आपको ये ऑप्शन जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे आपको टिक करना है. So जो भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी है वो ऐसे एग्जांपल के रूप में भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्टली प्रॉपर्टीज भी पूछ सकते हैं. व्हाट इज फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम? ओके. सो दिस एमसीक्यूज बनाने के लिए बहुत ऑप्शन ओनली यूनिट 4 एंड 5 ना? यूनिट 3 एंड यूनिट 4. 3 एंड 4. ओके. तो इंटरनल एक्सटर्नल के लिए ऑल है, एंड एक्सटर्नल भी आपका एमसीक्यू बेस्ड ही होगा. सर कंफर्म हो गया, कॉलेज ओपन नहीं होगी मतलब? अभी तक जहाँ जितना सर्कुलर्स जितने आए हैं वैसे गाइडलाइंस तो वही है कि एमसीक्यू इस सेमेस्टर का एमसीक्यू पैटर्न में ही होगा एग्जाम. सर बट हम लोग के प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे? प्रैक्टिकल्स रह जाएंगे पूरे या फिर कैसे कुछ कवर होगा उसका? देखते हैं ना, पहले थ्योरी होने दो, बाद में देखते हैं. ओके सर. फिलहाल कॉन्सेंट्रेट ऑन इंटरनल. ओके, थैंक यू सर. Okay, so next method is solvable for y. Solvable for y में क्या होगा कि अगर आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, if you cannot factorize the equation for the p, फैक्टराइजेशन करना मुश्किल हो गया, तो आप क्या करेंगे? either you will go for solvable for y method or you will go for solve for x method. So solve for y or you will go for the solve for x. and the जो मैंने आपको बोला था ये जो 4th चैप्टर है क्लेराउट्स इक्वेशन, इट इज अगेन अ पर्टिकुलर केस ऑफ सॉल्वेबल फॉर y. सो क्लेराउट मेथड कुछ अलग नहीं है. अगर आपको सॉल्वेबल फॉर y समझा तो क्लेराउट्स मेथड भी समझे. So in this equation, if you can express y as a function of x and p, so left hand side पे all y terms होने चाहिए, right hand side पे x and p के terms होने चाहिए, then we can differentiating with respect to x. तो दोनों साइड इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया तो dy by dx क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड p बन जाएगा, राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा? dy by x प्लस dy by p into tp by dx. Why it is so? Why it is so?
क्योंकि हम लोग x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x के साथ जब डिफरेंशिएट किया तो हम लोग को d बाई डी एक्स का टर्म नहीं लेना है, बट अगर f को हमने p के साथ डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा, डैबा f बाई डैबा p इंटू डी पी बाई डी एक्स। तो जहां जहां पे p के टर्म्स रहेंगे उसके साथ एक और टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो है डी पी बाई डी एक्स। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है, सॉरी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिस इक्वेशन 2 इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फर्स्ट ऑर्डर इन p एंड x। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो p एंड x में होगा, एंड ये इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इफ इट कैन बी सॉल्वेबल यू विल ऑब्टेन द सॉल्यूशन। सो कभी कभी ऐसा होगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन में कि आपको कुछ फैक्टर ऐसे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग द फॉर जनरल केस, if I have the factor like this, so I will solve only the second term. I will not solve for first term. First term will give me the singular solution. Always remember, if I have factorization in this second equation, अगर मुझे ऐसे मिला तो मैं सिर्फ सेकेंड इक्वेशन को कंसीडर करूंगा, क्योंकि जहां पे भी dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स है या dp बाई डी एक्स का टर्म है, दिस विल गिव मी द जनरल सॉल्यूशन and the first term will give me the singular solution. So we will not consider the factors which do not involve dp by dx. So in solvable for y as well as in solvable for x, we will consider only the derivative of t. जिन terms में derivative of t terms रहेगा उसको हम लोग solve करेंगे, अगर नहीं रहेगा तो नहीं solve करेंगे. That's the simple as that. Okay. So we will interested in this term dp by dx. dp by dx जहाँ पे मिलेगा वहां पे हम लोग उसको आगे सॉल्व करेंगे, उसका जनरल सॉल्यूशन नहीं. फिर इसको हमको p का कुछ वैल्यू मिलेगा in terms of x and c. We will get p in terms of x and c. So ये इक्वेशन, ये हमको सॉल्यूशन जो मिलेगा वो है 3. ये 3 एंड कंबाइन करके, मतलब यहाँ से p एलिमिनेट करेंगे, 1 से p एलिमिनेट करेंगे, देन वी विल गेट द जनरल सॉल्यूशन. सो ये ऐसे समझाना बहुत डिफिकल्ट है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस बाय द एग्जाम. ओके, अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस बाय द एग्जाम्पल. कंसीडर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. So let me solve this differential equation in one note. Okay, the sixth one. Okay, 16x square plus 2p square y plus p cube x is equal to 0. So let me write this. What is the equivalent of the LHC in case of a partnership? And again, so first हमको इसको एक्सप्रेस कैसे करना है? We have to express in the function y is equal to function of x and p. So what I have to divide? P square. 2p square. I want to divide by 2p square. So I will get p cube upon 2p square into x, okay, minus 16 x square upon 2p square. Okay, होगा px minus
16x स्क्वायर अपॉन 2 क्या होगा? 8 x square upon p square. Now let us differentiate with respect to x. So I will write differentiating with respect to x. What is the differentiating with respect to x gives? dy by dx. अभी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है टू एक्स, तो पहले p इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस x इंटू derivative of p. What is derivative of p? I will get dp by dx. Okay, minus 8 is common. Okay, now first term 1 by p square हम लोग बाहर निकालते हैं, ब्रैकेट में लेते हैं, 1 by p square बाहर निकालते हैं. What is the derivative of x square? 2x. Derivative of 2x. अभी नेक्स्ट टर्म क्या होगा? प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे. What is derivative of 1 by p square? सॉरी, यहाँ पे मैं 1/2 लिखना भूल गया शायद. दिस इज बाय 2. हाँ, अभी ठीक है. तो ये इसको भी 2 आएगा और इसके साथ भी 2 आएगा. ओके, नाउ इट्स करेक्ट. ठीक है, अभी बोलो एक्स स्क्वायर. व्हाट इज द इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ 1 by p स्क्वायर? 1 by p स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ p raised to -2. So what is the derivative of p raised to -2? minus 2p. minus 2p raised to -3. So it is -2 by p square minus 2 by p cube into derivative of p with respect to x into derivative of p with respect to x. So this is by the chain rule. चैन रूल क्या बोलता है? x के अलावा जो भी कुछ रहेगा उसके साथ उसका क्या जोड़ना पड़ेगा? अपने को डेरिवेटिव जोड़ना पड़ेगा. So this is the complete bracket. So let us write here dy by dx is equal to p equal to p by 2 plus x by 2 dp by dx. Then यहाँ पे क्या होगा? माइनस 8 into 2 is 16 minus 16x by p square. और ये क्या होगा? -2 minus -8 16 square. -2 माइनस प्लस हो जाएगा ये. So it is plus 16x square upon p cube into dp by dx. थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको. थोड़ा सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सब टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं. तो लेट अस सी p. तो यहाँ पे पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. ये बहुत डिवाइड करने में बहुत तकलीफ दे रहा है. 2p इज इक्वल टू p प्लस एक्स dp बाई dx. जितना ज्यादा सिंपल कर सकते हो उतना करने का. -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. 32 क्यों y आएगा? व्हाट इज दिस? dy बाई dx. dy बाई dx क्या होता है? p. Always remember dy by dx is equal to p. That's why we multiply both the side by 2 पहले. So it is 32x upon p square minus 2 से multiply किया तो it is plus 32x square upon p cube into dp by dx. Okay. So let us take to this side. You will get 2p minus p minus x dp by dx. यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा. प्लस 32x अपॉन पी स्क्वायर. ठीक है, अभी क्या होगा? ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा. माइनस 32x स्क्वायर अपॉन पी क्यूब इंटू dp बाय dx इक्वल टू 0. ठीक है,
So it is p minus x dp by dx, राइट. 2p माइनस p इज p, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 32x अपॉन पी स्क्वायर माइनस 32x बाय पी क्यूब इंटू डी पी बाय डी एक्स इक्वल टू 0. सर -32 x² है ना? हाँ, एक्स स्क्वायर आएगा ये, सॉरी. बोलो नेक्स्ट कैसे सिंप्लीफाई करूं. एनीवन. Let I am don't want this denominator. So what I can do for denominator? p² से मल्टीप्लाई. p स्क्वायर से अच्छा मैं p क्यूब से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में 3 Yeah. है. So what I will multiply instead of p square, what she said, I will multiply by p cube, क्योंकि यहाँ पे p cube है. So I will multiply by p cube. तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा p raised to 4 माइनस एक्स पी क्यूब dp by dx प्लस 32x बाय p p स्क्वायर. नहीं, हम लोग p क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 32x इंटू पी आएगा p आएगा यार. माइनस 32x स्क्वायर इंटू डी पी बाई डी एक्स. और यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, नहीं है. तो लेट अस मूव फर्दर. व्हाट इज कॉमन इन द फर्स्ट टू टर्म? कैन आई टेक आउट सम कॉमन? पी क्यूब कॉमन निकाला तो ये मिलेगा p माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स. यहाँ पे 32 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट टर्म में से मैं p क्यूब कॉमन निकालता हूँ. सो व्हाट आई विल गेट, p माइनस एक्स डी बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे 32x कॉमन निकालता हूँ. तो व्हाट यू विल गेट इन द ब्रैकेट, p माइनस x². No, x only x. Yeah, only x. x dp dp dx इक्वल टू 0. तो यहाँ पे भी p माइनस एक्स dp बाई dx है, यहाँ पे भी dp बाई dx है. सो व्हाट विल हैपन, इट इज p माइनस एक्स dp बाई dx into p cube plus 32x equal to 0. Now we will not consider this factor. We will not consider the factor given by this. ये हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें dp by dx नहीं है. So we will consider only the factor where dp by dx is there. So we'll write consider. So ये हमेशा ध्यान में रखना, this will give you the singular solution. इसका बाद में करेंगे, क्या होता है देखते हैं बाद में, पहले ये सॉल्व कर. Consider p minus x dp by dx इक्वल टू 0. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? p इज इक्वल टू dy by dp बाय dx. यहाँ पे बच्चे एक गलती करते हैं. क्या गलती करते हैं? वो p को dy by dx सब्स्टिट्यूट करते हैं. So we don't want p को dy by dx over here. So solvable for y में क्या करना है आपको, यही इक्वेशन सॉल्व करना है. dp by dx के टर्म में इक्वेशन सॉल्व करना है. तो कैसे करेंगे? टेक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. यहाँ पे मैं dx को लेके जाता हूँ अपॉन x विच इज इक्वल टू dp by p. कैन आई राइट लाइक दिस? Yes, sir. So it is variable separable form integrate. So simplest form आपका होता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. सो इसको मैं
होमोजीनियस से सॉल्व कर सकता हूँ, एग्जैक्ट मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, बट वो क्यों करना है? क्योंकि आपके पास सिंपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो वेरिएबल सेपरेबल से एग्जिस्ट करता है. तो व्हाट इज इंटीग्रेशन? log of x Is equal to log of p plus, instead of c I will write log of c. So it is, right hand side will become log of p into c. p into c. बात नहीं आ रही है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, log x is equal to log of p into c. So x is equal to p into c. Therefore p is equal to c by x. p आपको क्या मिला? c by x मिला. ना आपका ओरिजिनल इक्वेशन क्या था? देखो ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, ये वाला 16x स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर y माइनस p x क्यूब. सो ये इक्वेशन 1 है आपका. तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज पुट p is equal to c by x in ओरिजिनल इक्वेशन. ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो. क्या था ओरिजिनल इक्वेशन? 16x square 16x स्क्वायर प्लस 2p plus स्क्वायर 2p y. square y minus p cube x. 16x स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर y प्लस है क्या माइनस है? सर ये प्लस है यहाँ, माइनस और ये माइनस p क्यूब. बस तेरा माइनस पी क्यूब एक्स इक्वल टू माइनस पी क्यूब एक्स इक्वल टू 0. हाँ ठीक है, अभी p के जगह पे c रखो. सो व्हाट यू विल गेट 16x स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू y माइनस c क्यूब बाय एक्स क्यूब इंटू एक्स इक्वल टू 0. इसको सिंप्लीफाई करना है तो करो, नहीं तो रहने. ठीक है, सो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन. नाउ अगर मैं दूसरा फैक्टर लेता तो क्या होता? ये मैं बोला ना नहीं लेने का. सो इफ आई हैव p क्यूब इक्वल टू 32x, व्हाट डू आई गेट? dy by dx क्यूब इक्वल टू 32x. सो dy by dx इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 32x. okay, or you can write 32x raised to 1 by 3. So it is 32 raised to 1 by 3 into x raised to 1 by 3. Now, so it is dy equal to this term 32 raised to 1 by 3 into x raised to 1 by 3 into dx. Integrate both the sides. So you'll get y is equal to 32 raised to 1 by 3 into x raised to 1 by 3 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1/3 या 4/3. हाँ मैंने बच्चों को होल्ड करके रखा है. ठीक है. सॉल्यूशन विल बी योर सिंगुलर सॉल्यूशन. ये जो सॉल्यूशन मिल रहा है ना आपका, ये सिंगुलर सॉल्यूशन है बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व p. ओके, okay, so let's just wait for 2 minutes.
एक काम करते हैं, हम यहीं पे रुकते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे y का, फिर x का हम लोग देखेंगे, सॉल्व फॉर x। ओके, so we'll stop here.